Siamo gente strana, noi italiani, innamorati delle contraddizioni. Viviamo nel paese più bello del mondo e facciamo finta di non saperlo. E adesso che il paese è vuoto e lo possiamo ammirare solo dalla finestra, in tutto quel silenzio ci appare ancora più incredibile e la sua bellezza ci manca. Ma una cosa ci deve rassicurare: quando tutto questo sarà passato, noi torneremo a riempire quelle piazze e i monumenti che il mondo ci invidia torneranno a fare da sfondo ai nostri baci. Ci riprenderemo tutta quella bellezza, perché là, fuori dalle nostre finestre, c'è sempre il paese più bello del mondo. Che avrebbe dato la sua carne. कैसे लगा आपको? कौन सा देश है? इटली। वंडरफुल। तो आज हमारे साथ इटली से एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, प्रमुख अतिथि। हर नेम इज वैलेंटिना। मिस वैलेंटिना, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव टू शेयर विद देम, आई एम इन लव विथ इटली। हाँ, मेरा इटली से बहुत बहुत प्यार है, क्योंकि मैं बहुत जा चुका हूं वहां। और एक शब्द में अगर उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इटली को, तो आर्ट, ब्यूटीफुल। दैट्स इट। दैट्स द वन वर्ड that conveys everything about Italy. Beautiful people and beautiful city. Everything out there is beautiful. So Valentina, tell us about your childhood. Yes. So we want to start from the beginning, because I'm sure they want to know you
exactly. Yeah, well, I'm Valentina, first of all, and I came from Rome, as you can see. I was raised there, so I lived all my childhood in Rome. I studied there, and finally, when I went to start my job, I have to move to Milan. So basically, two cities are part of my life. Rome is from the earth, and Milan is like from the head and from the world, from the my actual life. Okay, I'll translate. So, वेलेंटीना जी कह रही है कि उनका जन्म रोम में हुआ, अपना बचपन उन्होंने रोम में बीता है उनका, और उसके बाद में जॉब के लिए, काम के लिए वो मिलान में आई. Here is my place. So Italy is my place. And actually, when the professor was describing Italy, I was thinking that I have the same feeling for India when I came here, because beauty and emotions is the things that, let me say, it's me the most. Beautiful people, warm people, very friendly, very like a family for me. I feel the same, let me say, warmth when I come back home, for example. उनका ये कहना है कि जैसे मैंने इटली को डिस्क्राइब किया, ब्यूटीफुल एंड देन आर्ट, राइट, वैसे उन्हें भी वैसे ही लगता है कि जब वो भारत में आती है तो उन्हें भी ब्यूटी और वार्मथ, मतलब एक जो इमोशंस, भावनिक, जो हमारे फिल्म में ड्रामा रहता है वो सब उन्हें दिखाई देता है सब जगह पे, तो भावनाओं का मतलब इमोशंस उन्हें दिखाई देते हैं, तो उन्हें बहुत वो पसंद आता है, जो आत्मीयता से जो लोग बात करते हैं उनसे, तो वो उन्हें बहुत बहुत पसंद आता है. Yes. And actually, Italians and Indians and Italy and India has a lot in common. We have ancient culture, we have a great food tradition, we love family at the most level, at the highest level, and we are also very experts in science, technology. So we have a lot of things that make us very similar, and we are like we are said as we are the Indians of Europe, because we have many similarities. So उनका ये कहना है कि इटली और भारत में बहुत बहुत सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि इटली में भी भारत के जैसे फैमिली वैल्यूज बहुत टाइट निट रहते हैं. मैंने खुद अनुभव किया है ये भी, और इटली और इंडिया में मतलब जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो प्रगति हुई है वो बहुत सिमिलर है. उनका ये कहना है कि इटली ये यूरोप का भारत है. I will introduce myself. Okay, this is me. It's Valentina. I was born in 1983, so I'm turning 40 on August. And I've always been a very active, very dynamic girl in my childhood, never stopping. Actually, my mom said that I never stopped in my childhood. Yes. तो ये उनका बचपन के फोटोग्राफ्स है. 1983 में 1983 आपका जन्म हुआ, और वो उनकी माँ कहती है कि ये बहुत एक्टिव है, जरा ज्यादा ही एक्टिव है. That's something I added. Yeah. Okay. She can tell. So she never stops. वो कभी रुकती नहीं किसी भी जगह पे. तो उनका बचपन, उसके बारे में वो बता रही है. And I'm always really curious about the others, really social child. And actually, this part of my character, this part of my soul is still here. I feel like, again, a child in this sense, the curiosity. वो बहुत एक सोशल पर्सन है, उनको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, और वो उनका कैरेक्टर उनमें अभी भी जिंदा है, हर समय जिंदा रहता है, और अब यहाँ आके भी उन्हें भी वही लग रहा है कि वो उसका मजा ले रहे हैं. There are people, this is my family network, okay, the closer family network, for sure my parents,
I have a sister, Elisa, and I created my own family with my husband, that is Luis, and we had a child, a daughter, that is Noah. And recently we added to the family a small puppy, Coco, that is our dog. ये फोटोग्राफ उनके फैमिली के हैं. थोड़ा सा आई विल ऐड समथिंग ऑन माय ओन, ओके, बिकॉज आई नो. सो उनकी फैमिली एक बहुत मातृसत्ताक फैमिली है. मातृसत्ताक मैट्रियार्किकल फैमिली है. Yes, absolutely. एंड उनकी फैमिली में उनकी माँ का बहुत बड़ा प्रभाव है, उनकी बहन का बहुत बड़ा प्रभाव है, और उनकी बेटी है नोआ, उसका नाम है. और रिसेंटली उनके पास एक छोटा सा डॉगी पपी है. हाँ, तो उसके बारे में उन्हें बताया. और हस्बैंड का नाम भूल गया, आई फॉरगॉट योर हस्बैंड्स नेम. Luis is her from Spain. husband's name, and you're going to tell us about your husband, right? Soon. Yes. So before that, tell us about your parents. What do your parents used to do? Yes, my mom was a nurse in the hospital during a lot of years, like 40 years working in the hospital. And my dad was a civil servant, so basically working for the state, working for the government. And they showed me with their work, with their examples, how you can devote to the other, how you can donate yourself to the other, basically. And that is something that I still keep in me. उनकी माँ एक नर्स है और उनके पिताजी नेवी में काम करते थे. और उन दोनों से उन्होंने यही सीखा कि दूसरे को हम कैसे, दूसरे की सर्विस कैसे कर सकते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना कैसे है. इसे हम इंग्लिश में एम्पैथी कहते हैं. सो हाउ टू बी एम्पैथेटिक, हाउ डू यू. सो उन्होंने उनसे वो बहुत कुछ सीखा. Exactly. And they also donated me my sister, okay, because it's a gift. My sister is really a gift. And she taught me the importance of sisterhood, importance of being together, importance of having someone like you that could understand you, and with which you could have any fight, okay? Fight with your parents, fight with your friends, fight with anything in the life that happens, okay? Having a sister and the sisterhood is really a superpower, okay? Is a weapon. So, मुझे नहीं लगता है आपको मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत है. समझ में आई बात? हाँ. So sometimes you don't need language. बहुत कुछ समझ जाते हैं. जो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है वो आपको झट से समझ आता है. तो उनका anyway, मैं पीछे किसी को समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ कि वो एक अपने सबसे बड़ा गिफ्ट उनके माताजी और पिताजी का उनके लिए उनकी बहन है. उसका नाम एलिजा है. और उनसे बहुत झगड़ा करती है, लेकिन वो दोनों एकदम एक दूसरे से बहुत करीब है. और yes, and I will also tell something about my own family, so the family that I created. I will tell a story about Luis, that is my husband. Tell us how you met him. So exactly. I met him, I studied in Rome, and I took 1 year off in Spain to study there. And I was really concentrated on studying and make my parents proud of me, also because I had the responsibility to being there when they paid me that period abroad. And by chance, I had one friend of mine there that invited me to go to see a show in theater. So, उनके पेरेंट्स ने, माता पिता ने उन्हें उनकी सारी पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में सपोर्ट किया उन्हें, और वो पढ़ रही थी तब आप you went to Spain at that time, or yes, during her studies she went to Spain. During जब पढ़ाई चालू थी तब उन्होंने स्पेन को विजिट किया.
And it happens that one of the actors on the stage was my future husband. And for me was like very different from me, very out of my circle of friends and interest in something. जब वो स्पेन घूमने गई थी तब उन्होंने एक शो देखने के लिए गई थी। तो शो देखने के लिए जब गई थी तो वहां एक एक्टर थे। क्या हुआ? लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट हुआ। दैट शी डिडंट से दैट, बट उन्हें वो बहुत पसंद आए। वो एक डिफरेंट पर्सन थे। he was a very different person that she met over there. And in some way we connected, yes, love at first sight, maybe. Yes. And when we met, but he had to go to Argentina. That was totally in another continent. And during 6 months, we were like contacting and keeping this kind of relation alive. तो उन्हें कुछ जरूरी काम से अर्जेंटीना जाना पड़ा। तो ये प्यार की जो आग लगी हुई थी, आई एम ड्रामेटाइजिंग द होल सिचुएशन जस्ट फॉर दैट, राइट? सो वो तो और भड़कती रही क्योंकि वो एक दूसरे से दूर थे, राइट? तो फिर उन्होंने अपना कांटेक्ट चालू रखा। And during time we stayed like 6 years apart from each other, but in any case we kept that the kind of bond, the kind of relationship, that kind of love alive, against all difficulties, against all distance, against also some language difficulties, because having with you a person from another culture, from another language, is not so easy. It creates difficulties. तो वो 6 साल एक दूसरे से, उन्हें पता था कि एक दूसरे से प्यार तो हो गया है, लेकिन 6 साल उन्हें एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। बहुत सारी कठिनाइयों उन्हें झेलनी पड़ी। और एक बहुत बड़ी कठिनाई ये थी कि वो दूसरे देशों से थे। एक स्पेन है, वहाँ स्पेनिश बोला जाता है, एक इटली है, वहाँ इटालियन बोला जाता है, और दोनों के अपने अपने बहुत कैरेक्टर्स है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है। तो इन सारी कठिनाइयों से मतलब उनका प्यार फिर भी अमर रहा, ऐसे वो शायद कह रही है। हाँ। And at the end of the story, against all difficulties, obstacles that we overcome during these 6 years, because then it came to Italy at the end, really I understood something. That is, when you put love at the center of your life, put love for a person that you love, put love for the work that you love, put yourself, okay, in what you are doing, things happen, okay? Apart from difficulties, apart from what the situation puts you in front of you, love basically can overcome everything. It sounds like sticky, okay? But it's true, because when you are focused and you are sure that what you are doing is right for you, you can achieve that. ओके। सो उनका यह कहना है कि उनकी जिंदगी में बहुत खुशनसीब है कि ये उनका प्यार उनका एक गाइडिंग लाइट था। तो ये प्यार बहुत सच्चा था, और उन दोनों ने ये बहुत उसमें एक बिलीफ था उस प्यार में उनका। और ऐसे जब हो जाता है तो सब चीजें अपने आप हो जाती है। वैसे ही उनकी जिंदगी के बारे में हुआ। And this is that works for life, so for love, for the people that you have around you. And I experienced this also for work. That is basically why I'm doing what I do, because I love what I do, actually, my work. तो उनकी निजी जिंदगी में अपने पति के करीब जो प्यार है, वैसे ही उनके प्रोफेशनल लाइफ में जो उनका काम है उससे भी उनको बहुत प्यार है, लगाव है। तो उसके बारे में वो आपको बताने वाली है कि about your professional life. Yes. The love about profession. Yes. So basically I work for a company, a big Italian company that is an engineering company. I'm not an engineer.
I studied political science, I studied social science, and I made a master on international projects, so far behind engineering. Okay. तो उनका खुद का तो क्षेत्र जो है वो इंजीनियरिंग का नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी डिग्री हासिल की है और ये जो कंपनी है जिसके बारे में वो आपको बताने वाली है वो तो एक इंजीनियरिंग कंपनी है। तो वो बताने वाली है आपको कि उनका इस कंपनी के साथ कैसे जुड़ाव हुआ उसके बारे में वो आप बताने वाली हैं। Yes, I work for WiSE, that is this big company, and I'm in the sustainability field, and especially in the social activities of sustainability. That is part of the let me say main action that we make as a company in sustainability. वो एक इटालियन कंपनी है मायरे, वहाँ काम करती है और वहाँ की एक डिवीजन है जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में काम करती है। मायरे एक इंजीनियरिंग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इटालियन कंपनी है और उसके सस्टेनेबिलिटी डिवीजन में वो काम करती है। And when I entered the company very young, there were all men, because in engineering, maybe you know that there is a lot of men there, so we need girls. जब वो कंपनी में गई पहली बार तो वहाँ केवल बंदे थे, मर्द थे, मेल थे और कोई लड़कियां नहीं थी। तो उस अनुभव के बारे में आपको बता रही है। So it costs a little bit to be listened and to be perceived as a professional, but with time it happens. तो ऐसी जगह में उनकी बात सुनना कोई सुनते ही नहीं थे। तो लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो अपना प्रयत्न जारी रखे और आस्ते आस्ते लोगों ने उनकी बात उन्हें पता चला कि ये किस चीज को, नई चीज को कंपनी के व्यवहार में ला रही है। So again, once you are sure that what you're doing is what you have to do because you love it, it happens that people rely on you, trust you, because that love, the people feel the love on what you do and puts you in the right position. एक बार आपको किसी चीज से भी इतना गहरा प्यार हो जाता है, वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में ना हो या कोई अपने बिजनेस में जो काम कर रहे हो उसमें हो, तो फिर सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो उसके बारे में ये आपको बता रही हूँ। And maybe I can take some words for sustainability that could be of interest. Okay. Sustainability means doing things today, thinking about what happened tomorrow. Okay, so basically make any kind of action considering what is the consequence, what is the effect that you generate with that action. तो वो आपको एक सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है वो आपको बताना चाहती है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आप आज क्या कर सकते हैं जिसका कल एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ फर्क पड़ सकता है, तो उसके बारे में वो काम करती है। क्योंकि जो करना है वो आज करना है, कल उसका कुछ फर्क पड़ेगा हमारी दुनिया में। तो उस चीज पे वो उनकी बहुत गहरी सोच है और उस दिशा में वो काम करती है। And it's particularly evident in the environmental side. So if we produce a lot of plastic and we throw it away, if we pollute with gas emissions and we waste our environment, tomorrow we will have a very huge effect on that. We can see in the climate change are the real effects of this kind of misactions in caring our environment. It is our home, our planet. Okay, so as a company, we try to reduce these misactions and to refocus a little bit more the activities on thinking about tomorrow, thinking about what happened to the environment when I make something. Okay, we as a company help other companies in making this possible. So in changing their way of acting
in order to be more sustainable, so not impacting so much in the environment and also on social level. हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, प्लास्टिक्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें जो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, तो उसका आगे की जनरेशन में, शायद आपकी जनरेशन में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो उन चीजों को लेके वो बहुत मतलब जागरूकता से काम कर रही है अपनी कंपनी की तरफ से, सो दैट आगे की जनरेशंस को कोई परेशानी ना हो। In the company where I work for, you see there are 4 areas where we are concentrating for sustainability that are at the same level important, essential, because when we consider our action, we have to consider at global level, global aspects. And especially in my job, I'm concentrating on the communities, on the social aspects of sustainability. That is a really important aspect that I will tell you later. हमारी कंपनी में हम 4 पर्टिकुलर विभागों में सस्टेनेबिलिटी का विचार करते हैं, और मैं उस कम्युनिटी जो है उसके बारे में उस एरिया में काम करती हूँ। I, especially in my job, relate with the people of the places where we work as a company, okay? And why the people is so important? Because people are the beneficiaries of the economic effects of we generate as a company. So, उनका ये कहना है कि उनके जॉब में जिस जगह में का प्लांट है, उनके आजू बाजू जो कम्युनिटी है वो उनके बारे में बहुत सोचते हैं, उनके बारे में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कम्युनिटी हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दे आर वर्किंग ऑन, एंड शी इज उसमें वो काम करती है। Because when you Myra is an engineering company, so design and build big industrial plants that are very impactful both for environment and for communities. तो इनकी जो कंपनी है उनका काम ये है कि वो बड़े बड़े प्लांट्स बनाते हैं हर चीजों के लिए, कम्युनिटी के लिए, मतलब एनवायरमेंटल रिलेटेड के लिए। तो उस दिशा में उनकी कंपनी काम करती है हर जगह पे। So if we want to say that we are sustainable, we have to take care not only to the economic aspects of our work, but also on what happens tomorrow to the community when we go there with these big plants. Okay, that's why it's part of sustainability, because we think today on our impacts of tomorrow, also in the communities. That's so beautiful. Yeah. So उनका ये कहना है कि उनकी कंपनी केवल पैसों का विचार नहीं करती है कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, जो भी हम काम करने वाले उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, बट उनकी कंपनी इस विचार में है कि प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम पैसे कैसे देंगे एम्प्लॉइज को। लेकिन वो इस दिशा में भी विचार कर रही है कि उस आजू बाजू की जो कम्युनिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और आज जो एक्शन वो ले रहे हैं उसका कल क्या परिणाम होगा, और कल परिणाम उनके कम्युनिटी पे ही होने वाला है। तो वो उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण मतलब दिशा में उस पर विचार करते हैं। And we have to bring all together our stakeholders, I don't know how to translate, all the stakeholders with us with the development of a country, of the territory where we are. Because when we go there for an economic reason, we have to be sure that all the community could benefit from that economic positive impact. And how we do that? With social sustainability, and we'll detail later on which is consistent. तो उनका ये कहना है कि जब भी वो नई दिशा में जाते हैं तो सबसे पहले वही महत्वपूर्ण विचार लेके जाते हैं कि कम्युनिटी के ऊपर उसका क्या परिणाम होने वाला है, और उसके बारे में उनकी कंपनी एज ए यूनिट सोचती रहती है। तो उस दिशा की आप लीडर है।
Yeah, you're the leader. Yes. Yeah. We are focused especially on education activities, on training activities, but also on women empowerment and lift up the condition, the perception of women in the society and in the economy. वो विमेन एम्पावरमेंट में बहुत काम करती है और अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी उसके बारे में बहुत काम करती है सो दैट जस्ट किसी एक सिंपल भाषा में बताऊं तो जस्ट थोड़े से लोग रिच ना हो, सबको साथ लेके जाना है, सबका विकास करना है, उस दिशा में इनकी कंपनी हमेशा विचार करती है जहां भी जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल इटली में ये सोचते हैं, वो इंटरनेशनल लोकेशंस में उनकी शाखा है, वहां भी वो यही सोचते हैं। And also because women empowerment is strategic for the development of the economy as a whole. Okay, when a woman is empowered, their children are empowered. So basically, the future is possible. The future is empowered. That's why we focus specifically in some projects on you, on girls, on women, because you have a superpower actually to multiply the impacts on the society very positively. That's why you are essential today, but more essential tomorrow. उनका यह कहना है कि विमेन एम्पावरमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे आगे की जनरेशन जो बच्चे होंगे उन पे भी बहुत बड़ा परिणाम होगा। तो उनकी कंपनी के लिए विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए वो आप पे भी बहुत ध्यान देना चाहती है। So basically you are here because we believe that you are the game changer of tomorrow. As young women, as future women, as future mother, you have really a infinite potential on your hands. Okay, so you have to take it, to treasure it, and to put really in front of you. Try to find your position, try to find your place in this world, but being sure and being really strong in putting yourself beyond everything. वो यहाँ है क्योंकि वो आपके लिए यहाँ है। लड़कियों को सक्षम करना ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और उनके कहने में ऐसा है कि अगर आप स्ट्रांग हो, आपका विल स्ट्रांग हो, तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो इसके लिए वो आपको बहुत चाहती है कि आप कुछ अच्छा करो। Yes, and just to finish is really up to you. The future is up to you. This is one experience that you lived during this week. Really powerful, I think. Really impactful, and keep it in your mind when you will grow, when you will start working, because this experience is really one of a kind. You are a very lucky girls because you are important, because you have the power to change whatever you want. Okay, but you have to be aware of it. You are strong. You have superpowers because we are women, and also because in front of you is an infinitive landscape of possibility. So very good luck and very good future. आपके पास एक अमर्याद पावर है, इन्फिनिट पावर है, जिससे आप कुछ भी कर सकती है। उनका यह कहना है कि जब आप बड़ी होंगी तो याद रखिए इस जो आपका जो अनुभव है यहाँ का, IIT बॉम्बे में आपने जो भी चीजें की है वो अनुभव अपने साथ याद रखिए, क्योंकि उनके कहने से कि आप एक बहुत भाग्यशाली लड़कियां हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ आने की और ये अनुभव करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसे याद रखिए। उनका ये भी कहना है कि आप एक सुपर पावर हो। हाँ, ये मत भूलना कि मैं जस्ट दूसरे किसी का सुनती रहूंगी। आपके पास अपने स्वतंत्र विचार करने की शैली होनी चाहिए, तो उसके बारे में वो आपको बता रही हैं। Okay, so thank you again for this opportunity. It's been a real an experience for me, okay, because I don't have the possibility to meet such a huge
group of girls usually in my everyday work, and especially in India. So really thank you for being here, for your attention, for your joy and enthusiasm, as I said yesterday, because you were really a surprise for me. So thank you. Oh, good. I don't have to explain that. Thank you. मैम, मेरा नाम साधना कुमारी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका इंटरेस्ट उसी कंपनी में जाने के लिए क्यों हुआ, और किसी क्षेत्र में भी तो आप जा सकते थे। She is asking you, why did you decide to go and My company. mayor? Okay. Yeah. What made you think that? What was the decision making? Good question. During my master, I made a dissertation project on CSR in big oil companies. Okay, because my previously was a big oil company. मेरे जो मास्टर्स के जो डिसर्टेशन था उसमें मैंने CSR में एक प्रोजेक्ट किया था। And when I started, CSR was like a very neglected issue. Sustainability was not such a big deal as today, but I felt that was my space, because I studied for that, for development and cooperation. So CSR was like really in my soul. CSR का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये आजकल एक महत्वपूर्ण मतलब एक भाग रहता है हर कंपनी का, शायद मैंडेटरी रहता है हर कंपनी के लिए। भारत में भी सब दुनिया भर में ये महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन जब एजुकेशन चल रहा था वो उस वक्त इतना महत्वपूर्ण भाग नहीं था। उन्होंने CSR में ही उनकी जो डिग्री, उसमें उनका जो डिसर्टेशन, जो काम चल रहा था वो उसी दिशा में कर रहे थे। So when they offered me to start this new activity in the company that was very, it was totally zero at that moment, I was so, let me say, happy to put my studies for my future job. So basically when they offered me the position, when I entered, was like, it's perfect for me. It's like my purpose. तो जब इस कंपनी में उन्हें जब ये पोजीशन ऑफर दी उन्हें, तो उस वक्त उनकी कंपनी में इस दिशा में कुछ भी नहीं था। तो उनसे शुरुआत हुई, तो ऐसे उन्हें लगा कि मेरी जो पढ़ाई हो रही है उसका ये मतलब प्रैक्टिकल उन्हें काम करने मिलेगा इस दिशा में, तो उनके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन था। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है। Hello ma'am, my name is Srushti. I am from Maharashtra. Ma'am, you tell us very similarities between India and Italy. What is the biggest difference you feel about difference in India and Italy? Okay, first of all, the dimensions. Okay, dimensions in space. India is basically a continent. It's really huge country. And in numbers of people. When I arrive in India, the perception is that it is a very involving country, because there is a lot of people here. In Europe, तो उनके कहने से उनका ये कहना है कि भारत और इटली में क्या फर्क है, राइट? तो उसके बारे में प्रश्न था। तो एक तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, almost like a continent, और इतने सारे लोग हैं। So basically, you can feel very physically the difference between Italy and India. And another important essential difference is the age. We in Italy are getting older and older. We are a very old population, actually. You in India are all so young. Okay, so you have an immense potential, because you are young as a nation, as a country. एक बहुत बड़ा दोनों कंट्रीज में एक डिफरेंस है कि इटली एक धीरे-धीरे ओल्ड पॉपुलेशन बनते जा रहा है, और इंडिया इज वेरी यंग, तो बहुत सारे यंग लोग इंडिया में हैं। तो ये हमारा इंडिया का स्ट्रेंथ है, भारत का स्ट्रेंथ है।
And another, maybe the last, is the language richness of India. In Italy, we have one language, basically, that is Italian. We have some dialects. But in India, what really touched me a lot is how you manage to speak so many languages at the same time. और एक फर्क, बहुत बड़ा फर्क है कि इटली में तो एक लैंग्वेज है, थोड़े डायलेक्ट इधर उधर है, लेकिन आप समझ सकते हैं एक दूसरे को। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इतने सारे लैंग्वेजेस भारत में हैं, फिर भी लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात है। Hello ma'am, my name is Bhagyashri. So ma'am, my question is, what is the specialty of Italy? Means which you like? Specialty. What is the special? What's so special about Italy? That you like? Difficult question. Yeah, I don't know. I can be objective since it's the most wonderful, country in the world, as the video said. But what I like the most is the warmth, the openness, the attitude to be very open and to let's enter people in. Let's enter the people in your family, let's enter the people in your friends circle. So basically, we need to interact a lot. We are a very interactive people, we need to gesticulate and to touch and to speak a lot. So we are really social people, we need the others. इसके भाषांतर की जरूरत है? नहीं शायद। तो मैं फिर भी करता हूँ कि इटली एक ऐसा यूनिक देश है जहाँ लोगों को मतलब एक दूसरे से बहुत इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है। वो बहुत बातें बहुत करते हैं, हाँ, और एक दूसरे के साथ एक फिजिकल जो बर्ताव रहता है वो भी रहता है, और वो बहुत एक दूसरे से बहुत आई गेस प्यार मोहब्बत दुश्मनी सब चलता है, जैसे हमारे हिंदी पिक्चर्स में दिखाई जाता है। तो वो आप अगर इटली विजिट करोगे तो आपको जरूर दिखाई देगा और आपको ऐसे लगेगा कि आप भारत में ही हो। It will feel like you are in India when you visit Italy. That's why I feel at home. Yeah. Any other question? हाँ. Ma'am, would you like to live in India for lifetime? Why or why not? Okay, maybe for the lifetime it's a bit difficult because of the distance with my family, basically. Okay, it will be difficult to manage. But I would like to experience some time living in India, because when I come, it's only for business purposes. So basically, really busy, really always rushing, and also for short periods. So I really don't have the real view, the real perception of India. Okay, so I would like a lot to stay here for more, and maybe to stay, why not, for a longer period living here. So yes, I would like really to live here again, because I feel at home already, so it will be really good for me, I know, and also for expanding my experiences, because when you live abroad, you experience to be a minority. Okay, when you are in your country, you are basically as any other. Okay, when you are abroad in a country that isn't yours, you have to reposition yourself and to understand how it feels to be the only one being you. Okay, so it's a very let me say unique experience. Exactly. उन्हें परमानेंटली इंडिया में रहना तो शायद दूर की बात है, क्योंकि उनकी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहती। उनकी फैमिली के बहुत वो करीब है, तो लेकिन जब भी इस वक्त भी अभी यहाँ आई है, वो हमारे आपको मिलने के लिए यहाँ स्पेशली आई है इटली से, और ये केवल 2-3 दिन का उनका सफर है। वापस चली जाएंगी, आज रात को ही वापस चली जाने वाली है वो, तो उनको मैंने रुका के रखा था आपसे मिलने के लिए। और उनका ये कहना है कि उनको भारत में थोड़े एक्सटेंडेड पीरियड
मे बी कुछ काम के लिए शायद आईआईटी में भी रह सकती है. You can stay in IIT also for some time. Maybe do teach a course or why not? things like that in CSR. And वो करना चाहती है क्योंकि उनका कहना है कि जब आप विजिटर रहते हो तो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन जब आप किसी भी कंट्री में जाके रहते हो कुछ 6 महीने के लिए शायद, तो एक माइनॉरिटी अपने देश में जब आप रहते हो तो आप उन सारे लोगों के तरह ही रहते हो, तो आपको कुछ फर्क नहीं समझ में आता है. लेकिन जब दूसरे देश में जाके रहते हो तो आपको एक माइनॉरिटी का क्या मतलब है. माइनॉरिटी मतलब पता है ना आपको कि आप मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी का आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है और वो एक्सपीरियंस आपको एकदम बहुत कुछ सिखा देता है. तो वो आप एक्सपीरियंस करना चाहती है. Hello, ma'am. My name is Ridham. I am from Vashim, JNV Vashim. So my question is, when you first came to India, it must be difficult for you to adjust in here, new people, new country. So I want you to share the experience of your first visit in India, and what is the most likely thing that you liked in our country and you wanted to be in your country? My first time here was basically the involvement of everything, the smells, the let me say crowd, the noise. For European people, we are more used to wider space, lower volume, and to be here was like to jump in a pool where everything is full of, let me say, inputs, full of sensation, and a lot of emotion comes, okay, that I didn't really put in place. But when I came back to Italy, then I understand which was the thing, okay? That is, India is like really a person for me, okay? So you have to get to know each other, to love each other, okay? So when I went again and again in India, I started having a real love for India, okay? A real perception of being in a relationship, actually, in India. So it's every time I came back, is a different step in our relationship. I feel stronger with India. I love it more and more. I understand more and more India. So for me, it's really like a person, okay? We are knowing each other a little bit, but basically, was the very first time was not so positive for me, as I can say, because of that, because I didn't understand rightly India, okay? But then the love came. उनका ये कहना है कि जब वो भारत में पहली बार 2015 में आई थी तो शायद उनका अनुभव इतना मीठा नहीं था. उस वक्त जब वो आके यहाँ वापस चली गई तो उन्हें पता चला कि यहाँ कितने सारे इनपुट्स होते हैं, कितने सारे स्मेल्स आते हैं, कितना सारा नॉइज रहता है, और मतलब अच्छे तरह का नॉइज भी, और इतने सारे इनपुट्स आपके सेंसेस को मिलते हैं. लेकिन जब वो वापस इटली चली गई तो उन्हें वो सब समझ में आया, और उनका ये कहना है कि इंडिया इज लाइक अ पर्सन. भारत एक एज एन इंडिविजुअल पर्सन की तरह उन्हें लगता है, और पहली बार मिले तो शायद कुछ खट्टा मीठा लगता रहेगा, लेकिन आस्ते आस्ते जब ज्यादा आपकी मुलाकात होती रहती है तो यू फॉल इन लव विद इंडिया. सो दैट्स व्हाट शी इज सेइंग कि शी इज रियली एंजॉयिंग इंडिया. उन्हें बहुत मजा आ रहा है. हाँ. My name is पल्लवी फ्रॉम JNV बुल्डाना. सर हिंदी में जैसे कि इंडिया में IIT बॉम्बे एक टॉप कॉलेज नाम से जाना जाता है, यहाँ का एजुकेशन अच्छा होता है. सो इटली में ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा होता है और वो टॉप है? मैं नाम सुनना चाहती हूँ उन कॉलेज को. So she is saying that just like IIT Bombay is one of the top schools in India, is there a similar top school in Italy? Yes, for sure. As I said before, there is a very strong tradition in scientific studies in Italy. We have a lot of big universities in Milan,
in Rome, but there are very excellent engineering centers and university all over Italy. We have strong tradition also in, let me say, nuclear studies, in very frontier studies and research in Italy. And basically is a very fertile background for those that could or would choice to have scientific studies, because there is a lot of connection between universities. So maybe you start in one university and then jump to another and another and another. And also at European level, there are lots of engineering centers, universities at a very high level. As you may know, we have, she's Italian, the first women leading the space station, the European Space Station is Italian, okay? Just to let you know that is a very, let me say, the right environment to grow as a scientist, okay, as an engineer, Italy. And we have also, as my colleagues always said, my engineering colleagues, that Italian engineers are different because put some way their personal and their humanistic side in engineering. Okay, so that would be a very one of a kind way to be a scientist in Italy. तो उनका ये कहना है कि इटली में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो एक मतलब एक ऐसा कॉलेज नहीं है जो उच्चतम पद पर है, बहुत सारे कॉलेजेस है और लोग मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अपना एजुकेशन करते हैं, डिफरेंट एरियाज है। न्यूक्लियर साइंस उनके यहाँ बहुत आगे गया हुआ है। जो फर्स्ट वुमन स्पेस स्टेशन की जो एस्ट्रोनॉट है तो इटली की है और आगे की बात तो मैं भूल गया। I forgot what. This is the total environment that came and raised engineers, and we have our own way. उनके इंजीनियर्स में उनका कहना है कि एक खूबी है कि एक ह्यूमनिस्टिक मतलब it's not just mechanics and engineering, but it's a human engineering, something that's used by humans, and वो टच जो रहता है एक वो उसमें है। उसके बारे में उन्हें बहुत अभिमान है। Yeah, more sensitive to social aspects, more aware of what people need, actually, not only technical side, but also human side of the science. My name is Shivstuti. I'm from Maharashtra. My question is that you like to working for women empowerment, or you're working. So what is your future plans for women empowerment? For projects, you mean? For next activities? Yes. Okay. Well, we have to planning it. And actually, I was talking with my colleague in the car this morning, just elaborating a little bit more how we could create something to boost women empowerment in next year in some activities. Basically, we have to focus on which is the need. So in my work, we start from listening, okay, the community. So what you need, okay, in terms of women empowerment, what women need in that particular community, in that particular country, okay. But basically, when we start from women empowerment, we always have to focus education, so give the tools to women to make, to uplift by their self, and children. Because we understood that when you care children, women have more time, more space, more concentration in doing what they are doing. Okay, so childcare within the same project of women empowerment is fundamental. Okay, so to allow women to be free in some way and concentrate on their duty. So next project, for sure, we focus on, yes, training, education,
and something that is related to get women closer to, economy and society power. Okay, we have just to focus on which is the right activity, but these are the main topics for sure. उनका ये कहना है कि उनकी वो सुनने का काम बहुत अच्छा करती है. She likes to listen. So वो सब उनके जो भागधारक हैं उनसे उनकी बातें सुनते हैं और उस सुनने के दौरान उन्हें पता चला है कि विमेन एम्पावरमेंट एक जस्ट शब्द नहीं है, तो आपको कुछ अंदर जाके कुछ करना चाहिए. तो उनका ये उनकी सोच ये है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए उनके साथ मतलब उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जनरली विमेन टेक केयर ऑफ द किड्स. सो उनके कंपनी के आजू बाजू उन्होंने एक डे केयर बच्चों के लिए नजदीक रहे, सो दैट विमेन कैन फोकस उनके प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में सोचे विदाउट एनी वरी. तो वो बहुत महत्वपूर्ण है. उस दिशा में वो बहुत काम कर रही है और मतलब आगे भी वो बहुत कुछ करना चाहती है इस दिशा में. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो सुनती है सबका ओपिनियन. शी लिसन्स टू द फीडबैक दैट शी इज गेटिंग सो दैट दे कैन प्लान नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स. Exactly. मैम, माय नेम इज गार्गी, आई एम फ्रॉम जेएनवी बुल्ढाना. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अभी तक कितने बार इंडिया में आए हैं और कितनी बार आना. How many times you've been to India and how many times you would like to come back to India? Oh. She's curious. How many times? So it's like 6 times, 6 maybe. times. And I will be back next month and maybe after the summer. So I'm very present in India actually in the next month. So yes. And as I said before, I would like to have some more extended period here in India and also bringing my family. Because I always, when I stay here in India, is always for work, okay? But I would like to bring my husband, especially my daughter. She is 4 and she's going to turn 5. Because since it's very totally different place, India, from Italy, I'm sure that is really an experience for her. So I would like really to come back with them. ऑलरेडी वो 6 बार आ चुकी है भारत में और बहुत बार आने वाली है. मुझे नहीं लगता कि वो काउंट कर सकती है, प्रेडिक्ट कर सकती है. नेक्स्ट मंथ आने वाली है एंड देन अगेन शी विल कम हियर अगेन मेनी टाइम्स. उनका ये कहना है कि उन्हें एक्चुअली अपनी खुद की फैमिली को लेके आना है, उनकी बेटी को लेके आना है. योर डॉटर्स नेम? अनोआ, करेक्ट. तो उन्हें लेके आना चाहती है, हस्बैंड को लेके आना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि जब आप अपने फैमिली को लेके आते हैं तो फिर आपको एक दूसरा अनुभव मिलता है. तो उसके लिए वो बहुत उनको एक्सटेंडेड पीरियड, ज्यादा वक्त यहाँ गुजारना है. जैसे हम रहते हैं वैसे उनको यहाँ रह के एक्सपीरियंस करना है. मुझे ये पूछना था कि हमारी कंपनी का नाम मैंने पहली बार सुना है, तो हमारी कंपनी कहाँ पे शुरू हुई? तो बताया हमें सर ने बताया. तो आखिर में हमारी कंपनी क्या करती है, ये मैं जानना चाहती हूँ. She is asking if she has not heard of Meyer Company. So she wants to know what Meyer Company does. You already said it's an engineering company, but you can kind of go in details of you what are right. You don't know Meyer, and there is a reason why. Because Meyer works only for other companies. So it's not a company that produces anything for extended public. Meyer is an Italian company, so was founded in Italy by an Italian entrepreneur, and is basically an engineering company. So 90% of our employees are engineers. So they design big industrial plants. They, let me say, offer to our clients also how, let me say, the instruction to work these plants. And they also work on the technologies that is behind the building of these plants. We historically
were in the oil and gas industry. So basically, we design and build for very big oil companies. Since 4 or 5 years, we understood that that was not the future. Okay, that all the economy, oil and gas, have to change. So we should exit from oil and gas. So as a company, we decided to move towards what is called energy transition. Okay. I don't know if you want to translate. Okay. So आप सच कह रहे हैं कि मायर कंपनी के बारे में आपने कुछ सुना नहीं है, क्योंकि वो कुछ बनाते नहीं है, मतलब उनका ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो आप बाजार में जाके खरीद सकते हैं। लेकिन मायर कंपनी बहुत सारे कंपनियों के पीछे काम कर रही है, वो बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, तो प्लांट्स बनाने का काम मायर कंपनी करती है। उनकी कंपनी में करीबन 90% इंजीनियर्स हैं। तो उनकी कंपनी का मतलब पहले वो ऑयल एंड नेचुरल गैस उस दिशा में काम करती थी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अभी उन्हें पता चला है कि ये शायद आगे का फ्यूचर नहीं है, तो आस्ते आस्ते उस दिशा से वो अपना बदलाव लाने लगी है उस दिशा में। And energy transition means that we have to make a change towards more sustainable energy sources that are basically renewable sources, so all the bio sources, but also to implement the circular economy. So basically, we are also concentrated on waste recycling, on how to it's called upcycling waste. So reuse what is in the waste to produce new materials. Okay, but we are also on the study of new energy sources or energy carriers, as it's called, like hydrogen. So in this moment, Maya is really concentrating on looking at the future evolution of the energy sector. And that's why our engineers that are traditionally chemical engineers reshaped their way of working, basically. So they are trying to figure out how to put the same expertise that we use for the old economy, oil and gas, at the service of a new economy, a more sustainable economy, a green economy, basically. उनका ये कहना है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस से तो हम दूर चले जा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्रोत एनर्जी के जो है, जैसे बायो एनर्जी है, तो उस दिशा में वो जाना चाहते हैं। तो उनके पहले केमिकल इंजीनियर्स रहते थे, लेकिन अभी उनको रिट्रेन करके इस दिशा में अभी सारे मतलब विचार कर रहे हैं। तो कंपनी का एक अंदरूनी बदलाव हो रहा है उनके अंदर की नई आगे की हमारे फ्यूचर के लिए कुछ नया करना चाहिए, सो दैट अगर वो नहीं करेंगे तो हम रेलेवेंट नहीं रहेंगे। तो उसके लिए वो मतलब कंपनी बहुत जागरूकता से काम कर रही है। And we are in India as a group with a huge group of engineers here in Mumbai. Are like 2,000 engineers working here in Mumbai. And that's why we have such a big interconnection with the country. And we always say that we are like an Italian Indo group, because basically half of our workforce is in India. तो उनका ये कहना है कि मुंबई में उनके 2000 मतलब एम्प्लॉइज है, इंजीनियर्स हैं, जो अभियांत्रिक शाखा में काम कर रहे हैं डिफरेंट, और उनको ऐसे लगता है कि ये कंपनी इंडो इटालियन है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स इंडिया में हैं। So if you want to, when you study engineers or something, want to apply for us, we are here waiting for you. We need girls. We need girls, because engineering sector is a real male lead sector, and we need a lot girls. So please come. तो उन्होंने आपको एक ओपन इनविटेशन दिया हुआ है कि जब आपकी पढ़ाई खत्म करेंगे, जो भी मतलब अगर अभियांत्रिकी करेंगे
तो वो पढ़ाई खत्म होने के बाद में अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। वो करने के बाद में आप जरूर उनकी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर आपको कुछ उनके साथ आगे काम करना हो तो वो जरूर आपको मौका देगी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत है, स्पेशली विमेन इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है। Good morning, ma'am. I'm Kanika from Janvi Amravati. I want to ask that, as we all know that in everyone's life, many obstacles came and we have to face it with courage. Any such situation, difficult situation came in your life that you had to face and you really want to share it? Okay, I'll tell you. So they have seen all the Winspirers, and all of them were particularly chosen because they overcame a lot of huge obstacles in their life. They all know that. So she's asking, did you have to face any obstacles in your life, like personal life, whatever? Yes. Yeah, so you could explain yes. that. Yeah. That's something Yes, that I didn't share with the professor. Yes, Okay. that's good. Very good. My husband last year was ill, okay, during a long time, and we didn't figure out how to which was the cause of this illness, okay. It was a really challenging moment. मेरे पति बहुत बीमार थे पिछले साल में, और उन्हें कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। Because the uncertainty of the condition of my husband put a lot of pressure on me, because I was the leader of the family in that moment, okay? Managing also my daughter and explaining her why the father was ill and why there was such a situation, okay? This is a really, yeah. अब तो वो एक अपने फैमिली की मतलब मेन लीडर है ना, तो उन्हें उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पति बीमार है और अपने बच्चे को कैसे समझाए, नोआ को कैसे समझाए कि क्या हो रहा है। वो तो 4 साल की है, तो ये बहुत बड़ी कठिन समस्या उनके सामने थी। And during lasted like 9 months period, so it was quite a long period. Was like changing me, okay? Because you have to rely on yourself only. Okay, there was a family for sure. There were my parents that were helping me in some way, but at the end of the story, you are the family leader. Okay, taking the responsibility for everything. And when we finished this horrible period, I was like, okay, I have to say you have done a good job, okay? Because I really did a good job, okay? Bringing all the family, upon my shoulders and keep working and keep also my daughter serene and happy because she's a child, okay? It was like a very challenging moment for me because I didn't know that I had that kind of strength in myself, okay? Surprised me a lot. उनका ये कहना है कि जब उनके पति बीमार थे तब सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। उनकी फैमिली का उन्हें सपोर्ट था, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सपोर्ट था, तो सारी डिसीजन सब कुछ करना उन्हें ही पड़ा, और इसी दौरान उन्हें अपने बच्चे को भी संभालना पड़ा। उसके ऊपर कुछ ना असर आए, मतलब घर में एक शांत वातावरण रहे। उन्हें कैसे समझाए कि उनके पति Noah's father he is very severely ill, so ये 9 महीने का एक बहुत कठिन पीरियड था उनकी जिंदगी में, और उस कठिन समय से वो मतलब पार करके जब बाहर आई तो उन्हें समझ में आया कि उनके अंदर कितना एक स्ट्रेंथ है, और उन्हें अच्छा लगा कि उन्होंने ये एक रियल लाइफ जिंदगी का जो एक इम्तिहान रहता है वो अच्छी तरह से पास किया। And this experience also taught me that when you are in a very low moment of your life, you find the right way to go out, okay? There is always an exit through the darkness, yeah. जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो पूरा सब कुछ काला कलूटा लग रहा है, तो उस वक्त जो आप एक रास्ता निकालते हैं वो अपने आप
चला निकल जाता है, क्योंकि उनकी एक आत्म इच्छा है, एक अंदर से जो ऊर्जा है उनकी उनमें, आप सबको तो दिखाई दे रही है कितनी ऊर्जा है, तो रास्ता तो अच्छी तरह से निकल ही जाता है. Yes, and also taught my daughter, and I saw the change in my daughter in developing a lot of sensitivity, a lot of empathy, a lot of attention to the other's condition. That I'm sure that these experiences will be at the end of the story positive also for her. इस अनुभव के दौरान उनकी बेटी में भी बहुत सारा बदलाव आ गया है. एक दूसरे के दर्द को समझना, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, उन्हें दिखाई दे रहा है कि कैसे मतलब ये किया जाता है, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस. तो वो बहुत खुश है कि उनकी बेटी को भी एक बहुत अच्छा एक लेसन या अनुभव मिला है. गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गौरी कुमारी है. मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप अपने कंपनी में कितने समय से काम कर रही है? She's asking you how many years you've been working at Mayor. Oh, a lot, 14. Because I started when I finished my study, when I discussed my dissertation project. 3 hours after I was making my interview to enter so it was like very seamless process and jumping from the university studies to the work. So basically it's my first company when I worked for, and it's like from 2009 that I worked there, so it's like very part of my life actually. तो 2009 से वो काम कर रही है, करीबन 14 साल काम कर रही है इस कंपनी में. उनका जब ग्रेजुएशन हो रहा था तभी वो उनके साथ जुड़ी थी एक प्रोजेक्ट के दरमियान, और ये इस पहली कंपनी में उन्होंने काम किया है, और वही कंपनी में आज तक वो काम कर रही है. 14 साल काफी लंबी. मैम, आई एम खुशी फ्रॉम बिहार. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप 6 बार इंडिया आए, तो अलग अलग एक्सपीरियंस होगा आपके पास, तो सबसे ज्यादा अच्छा आपको कब लगा? So she's asking, you visited India 6 times, and every time probably you had different experiences. So what was the most favorite experience that you have had so far about India? Always the last, because as I told before, since we are getting to know each other, the strange thing that was I thinking when I was in the plane arriving in India. Well, usually when I am preparing my trip, it's like okay, I have everything set, what I have to do when I come and so on. It was like very smooth this time, smoother than the other times. I don't know why. I was really much relaxed in coming to India, and basically it's what was said before, because I know India now. Okay, after 6 times, I'm starting to understand India. I'm starting to feel comfortable moving around, meeting people, and having, let me say, my time in India. So I'm really sure that next time will be the best time, and the time after the best time again. So it's really growing in my, let me say, my experience to be in India for sure. उनका ये कहना है कि हर समय जो उनका जो लास्ट ट्रिप रहता है वो सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि भारत को वो अच्छी तरह से जानने लगी है. प्यार बहुत गहरा हो रहा है. हाँ, तो हर वक्त वो जब आती है तो उनको पता है कि क्या होने वाला है. इस वक्त भी एक स्मूथ ट्रांजिशन, उन्हें कुछ ज्यादा सब कुछ प्रेडिक्टेबल रहा है, तो उन्हें कुछ ज्यादा मतलब कुछ कठिनाई नहीं हुई. तो उन्हें पता है कि अगली बार जब आएंगे तो वो इससे बेहतर रहेगा. आप इंडिया में क्या सीखना चाहते हैं, कौन सी बात सीखना चाहती है, और अपनी बेटी को, फैमिली को कौन सी अच्छी बात सिखाना चाहती है? So she's asking, what exactly would you like to learn from India, and what would you teach your daughter from India? I mean, very, very what lessons you learn, or beautiful question. You see, I would like to teach my daughter about India, about the
the richness of diversity, basically, because when I'm here, I really see in all the faces, the places, again, the smell, also the food. India is the place of diversity, actually. And this, from a child point of view, is like overwhelming, because there are a lot of things to understand and to process. But it's really a training experience, you know. So I would like to teach my daughter to understand and to be, let me say, open to diversity, open to what happened different from you. And in India, this is really at the highest level, you know. So from my daughter's point of view, knowing her, that is really precise, really attentive to the details and so on, would be a super powerful experience to stay here and to also listen different languages and again, understanding that she is, let me say, in a place that isn't her place. It's really training experience. When I studied abroad in Spain, I felt that sensation, okay? Because you're there, you are not, you don't have reference, familiar reference in any kind of experience. So these aspects are really part of a growth of a person, I think. And I would like really my daughter to live this. उनका कहना है कि ये एक जो विविधता है भारत में, वो सबसे बड़ी एक शक्ति है भारत की। तो उसके बारे में वो चाहती है कि उनकी बेटी सीखे। उनकी बेटी एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट जो कहते हैं उसमें है। यहाँ आते ही इतने सारे इनपुट्स मिलने वाले हैं, इतनी सारी चीजें, विविधताएं हैं, और वो सब चीजें चेंज होती रहती है, लोग चेंज होते रहते हैं, लोगों की बातें अलग अलग है। तो उन सब इनपुट्स को मतलब हैंडल करना, उनके साथ मतलब मिलजुल के व्यवहार करना, वो बहुत बड़ी एक उनको एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, एक सीखने का एक अनुभव मिलेगा उन्हें। तो वो उन्हें बहुत मतलब महत्वपूर्ण है उनके लिए। एक one last message that you would like to give the entire yes. Yeah, basically, as I said before, you are the future, because women have to be the future. We are half of the population in worldwide, so we are not a minority, okay, as women. So we have to take the power, okay, take the stage. Take all the superpower that we have and put really at the service of something. Okay, you have to have a purpose in your life, to experience love, real love for a person, for your job, for anything you are focused on. Really live it at the best, with the intensity, with a lot of energy. Okay, and in this way you will reach whatever you want. Actually, whatever you want, in work, in personal life, in your personal growth. So be really focused on you, because it's on you that are the tools to go on and to make something special happen. Okay, so you are really the future. You are the center of everything. So good luck and good future. मैं ट्रांसलेट करता हूँ शायद। तो उनका ये कहना है कि लड़कियों की संख्या पूरी दुनिया में 50% है, 50%। ऑल ऑफ यू आर 50%। तो आप ही एक सुपर पावर है, और ये जो करना है वो आपको करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, और ये अपने अंदर की जो शक्ति है उसे आपको जागरूक रखना है। आपका अधिकार है ये सब चीजें करने का। तो आपको मतलब आपको एक मतलब इस शक्ति को अपने हाथ में रख के कुछ करना है। इसके बारे में एक बहुत पावरफुल आपको उन्हें संदेश दिया है, और वही आपको देना चाहती है। धन्यवाद।